मैम आप स्टार्ट कर दीजिए। Okay. मैम Good स्टार्ट कर morning, दीजिए। class. Okay, good morning, class. हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं. उसके अंदर we today are going to start with remedies for breach of contract. So we will cover this chapter, remedies for breach of contract. And once we have done it today, I'll start with contract of agency in today's class only. Right. So remedies of breach of contract समझने के लिए let us first understand what is breach of contract. तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब दो पार्टीज when they are entering into contract, then both of them they have certain duties, certain obligations on their respective parts to perform. ठीक है. Now if they break their duty, if they don't perform their obligation willfully, इसको हम बोल देते हैं breach of contract. हमने जब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, आई गेस चैप्टर last Saturday ही we did discharge of contract and quasi contract. तो discharge of contract के अंदर हमने पढ़ा था कि one mode of discharge of contract is breach of contract. तो उसके अंदर breach of contract हमने क्या समझा है कि जब contractual obligations जो होती है उनको परफॉर्म ना किया जाए, उनको ब्रेक किया जाए, उनके ऊपर एक्ट ना किया जाए, then we call it a breach of contract. So breach of contract means to break the obligation imposed by the contract or not to act upon the agreed terms and conditions of the contract. Now what are the different types of breach? Breach क्या क्या हो सकता है? Breach एक हो सकता है actual breach of contract and breach could be anticipatory breach of contract. तो एक्चुअल ब्रीच का हम एग्जांपल लेते हैं. फॉर इंस्टेंस ऑन 1st of June 2022, ठीक है, 1st June 2022 को ए ने बी को अपनी कार, ठीक है, ही हैड वन कार होंडा सिटी फॉर इंस्टेंस, उसके पास कार थी होंडा सिटी. ए ने अपनी कार बी को सेल करनी थी, ठीक है, ए ने अपनी कार बी को सेल करनी थी. और अगर अब बी इस दिन ऑन 1st June 2022 इस डेट पर उसको अपनी कार सेल नहीं करता, बी वेट्स फॉर द एंटायर डे, लेकिन ए उसके पास नहीं जाता, ए उसे अपनी कार उस दिन जाके सेल नहीं करता. यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? दैट ए कमिटेड अ ब्रीच. इस दिन कार डिलीवर करनी थी, ए को कार सेल करनी थी, कार वाज सपोज्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू बी, बट ए ने ब्रीच किया, ए डिडंट डिलीवर द कार टू ए. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन पार्ट ऑफ ए. राइट, ये हो गया एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? एंटीसिपेटरी ब्रीच, ना फॉर इंस्टेंस मैं यही एग्जांपल रिपीट करती हूँ. 1 जून 2022 को ए ने कार डिलीवर करनी थी बी को, ठीक है, लेकिन ए ने 28 मई को, ए ने 28 मई को जो अपनी कार है वो सी को सेल कर दी. 28 मई को सी को सेल कर दी, ठीक है. 1 जून को डिलीवर करनी थी ए ने बी को होंडा सिटी, लेकिन 28 मई को ए ने वो कार सी को डिलीवर कर दी एंड वी गॉट टू नो अबाउट इट. कि ए अपनी कार 28 मई को सी को बेच चुका है. अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ये हो गया एंटिसिपेटरी ब्रीच, कि यहाँ पर बी को आइडिया मिल गया कि जो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 1 जून, उस दिन पर ए ब्रीच करेगा. राइट, तो बी को क्या आइडिया मिल गया? बी को आइडिया एक्चुअली सिचुएशन में मिल गया, बी को पता चल गया 1 जून को उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके जो ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ए की ऑब्लिगेशन है, ए इज नॉट गोइंग टू डू बिकॉज ए हैज ऑलरेडी सोल्ड हिज कार ऑफ टू सी. तो ये हो गया सेकेंड केस 28 मई को, ठीक है. दिस इज एंटिसिपेटरी जब एक्चुअल डेट से पहले आप एंटिसिपेट कर लेते हो कि जो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उस दिन वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं होंगे. सो दैट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच. राइट, ये दो चीजें क्या है? दो टाइप्स ऑफ ब्रीच है, एक है एक्चुअल ब्रीच और एक है एंटिसिपेटरी ब्रीच. एक्चुअल ब्रीच में क्या हो रहा है? द पार्टी इज कमिटिंग द ब्रीच ऑन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट
Anticipatory breach में something before is happening and because of which the other party is able to anticipate that on the date of the contract it won't be performed, contract won't be performed. So ये हो जाता है anticipatory breach. So I hope this is clear to all of you till here. ये actual breach of contract और anticipatory breach of contract क्या है? Right. Next is remedies for breach of contract. So remedies for breach of contract का मतलब ये है कि अगर breach हो जाता है, right? So aggrieved party वहां पर is in an unfavorable situation. So उस unfavorable situation को make up करने के लिए what are the remedies available to the aggrieved party? ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास ये सारी remedies हैं. We have these 5 remedies in case of breach of contract. Right. तो सबसे पहला remedy है suit for damages. Right. सबसे पहली remedy available in case of breach of contract is suit for damages. Now, damages क्या होते हैं? For instance, damages is basically loss suffered by the aggrieved party. क्योंकि जो दूसरी पार्टी है, ठीक है, जो प्रॉमिसर है, उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया. सो लॉस सफर्ड बाय द अग्रीव्ड पार्टी इज बेसिकली डैमेज हो रहा है सेकंड पार्टी को. अगर एक पार्टी अपना जो प्रॉमिस है उसे परफॉर्म नहीं करती तो सेकंड पार्टी इज सफरिंग सम सॉर्ट ऑफ लॉस. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस डैमेज थ्रू एन एग्जांपल. फॉर इंस्टेंस, ए अपना हाउस रेनोवेट कराना चाहता है, ठीक है, उसने अपना हाउस रेनोवेट कराने के लिए एक कंस्ट्रक्टर को दिया, बिल्डर को दिया या कंस्ट्रक्टर को दिया, व्हाटएवर यू कैन कॉल. ए ने अपना घर कंस्ट्रक्टर को दे दिया और कंस्ट्रक्टर ने बोला दैट आई विल टेक 1 year टू डू द रेनोवेशंस इन योर हाउस. आपका घर तोड़ के उसको दोबारा बनाने के अंदर आई विल नीड 1 year. So A said, okay, you take 1 year. For the period of 1 year, I will go and live on rent somewhere else. So A कहीं अपनी फैमिली को लेकर कहीं और जाके रेंट पे रह रहा था और कंस्ट्रक्टर से उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ऑन 1st January A will get the house. A will shift to his house on 1st of January, right? But constructor ने promise क्या था that A is going to give money to constructor for building up of the house. और constructor का promise क्या था that he is going to give the house in a livable position to A on 1st of January. That is exactly after a period of 1 year. So what happens that constructor is not able to fulfill his promise. He is not able to build the house by 1st January. So A is not getting the possession of the house on 1st of January. Right. So contract made, the term was to deliver the house on 1st of January, which is not happening. So that's a breach. Constructor is breaking the promise of delivering the house on 1st of January. So what is happening here? अब A का कैसे लॉस हो रहा है? A was staying on rent. A कहीं और जाके रेंट पे रह रहा था. Suppose कंस्ट्रक्टर ने 3 months और ले लिए उस हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, काम बहुत स्लोली किया और 3 months और ले लिए. सो ए का यहाँ पे क्या लॉस हो रहा है? ए का यहाँ पे लॉस हो रहा है कि उसको 3 months तक किसी और घर में रहना पड़ रहा है और किसी और घर का उसको रेंट पे करना पड़ रहा है, ठीक है. ही वॉज लिविंग ऑन रेंट. सो ए हैड टू पे रेंट फॉर 3 months एक्स्ट्रा. ए इज पेइंग रेंट ऑफ 3 months एक्स्ट्रा. So यहाँ पर डैमेज क्या हो रहा है? Because of breaking of this obligation by constructor, that A is paying extra rent of 3 months. Right. So this is a damage. So what is basically a damage? Damage is when we say damage is basically the monetary compensation being given to the aggrieved party for the loss or injury suffered by him. I'm repeating, what is damage? Damage is monetary compensation being given to the aggrieved party for the loss or injury suffered by him. तो यहाँ पर loss क्या हुआ है
यहाँ पर ये लॉस हुआ है that the person is not getting the house for 3 months and he has to pay extra rent of 3 months. So this is the damage caused to A. This is the loss for A, right? So this is suit for damages के अंदर what is happening, the person the A, in case he wants to go to court of law, A will go to court of law and he will sue constructor for damages. What are the different kind of damages available? Right. So first of all, sir, we also understand one thing. जो object है damages का, that is to place the aggrieved party in the same financial position in which he would have been had the breach of contract not occurred. यहाँ पर जो damages हो रहे हैं उनका purpose ये नहीं है कि हमें जो पार्टी अपना प्रॉमिस ब्रेक कर रही है उसको पनिशमेंट देनी है. पनिशमेंट देने का, गिल्टी पार्टी को पनिशमेंट देने का पर्पस नहीं है. पर्पस ये है कि जो पार्टी ग्रीविंग पोजीशन में है, जो अग्रीव पार्टी है, तो अग्रीव पार्टी को कॉम्पनसेट किया जाए. So the purpose is to compensate the aggrieved party and not to punish the guilty party. I hope the purpose of damages is clear to all of you. Right. So what are the different kind of damages? सबसे पहला है general और ordinary damages. So general ordinary damages क्या होते हैं? General ordinary damages वो होते हैं which arise naturally from the breach of contract. अगर breach हुआ तो उससे they are arising naturally. They are a result of, they actually are direct consequences of breach. जो ये damages होते हैं, they are the direct consequences of breach. मैंने यहाँ पर जो ये example repeat किया, जो example state किया कि A को अगर उसका जो घर है 3 महीने 1 जनवरी को नहीं मिलता, कंस्ट्रक्टर अपना उसको 1 जनवरी को डिलीवर करने के लिए मना करता है, तो उसको 3 महीने का किराया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है. So what is this? This is damage which is happening to him as a direct consequence of breach. Right? This damage is happening to him. Damage क्या है? To pay 3 months rent. This is happening as a direct consequence of breach. Right? So ये वाले कौन से damages हो गए? इनको हम बोलते हैं general और ordinary damages. General and ordinary damages वो होते हैं which are arising naturally from the breach of contract and they are arising out of direct and proximate consequences. Proximate जो near causes हैं because of breach, उनकी वजह से ये हो रहा है, right? General damage, they do not cover remote or indirect losses. So indirect losses के लिए हो जाते हैं special damages. So let me explain special damages through an example. Just give me a second, class. Yeah. So I hope I am audible. Yes, now it shows. So next is special damage. I hope this general ordinary damage clear है. General ordinary damages वो होते हैं which are the direct consequences of breach. जो indirect consequences of breach हैं उसे हम बोलते हैं special damages. So these are those damages which are arising due to presence of certain special circumstances. For instance, मैं यही example repeat करती हूँ damages वाला. ए ने अपना घर कंस्ट्रक्शन पे दिया सी को, बिल्डर को दिया, कंस्ट्रक्टर को दिया सी को बिल्ड करने के लिए, और कंस्ट्रक्टर ने 8 जनवरी को उसे घर वापस करना था. तो ए अपने घर में रेनोवेट करा के 2 फ्लोर्स बनवा रहा था. एक वो बनवा रहा था खुद के रहने के लिए, राइट. he would live by himself in that house. ठीक है, वो 1 साल के लिए जाके रेंट पे रह रहा था. और एक फ्लोर वो बनवा रहा था
बी को रेंट पे देने के लिए। अनदर फ्लोर ही वाज गिविंग टू बी ऑन रेंट। ठीक है, अब यहाँ पर इस केस में अगर देखा जाए, अगर 1 जनवरी को पोजेशन नहीं मिलता ए को, तो ए को यहाँ पर क्या लॉसेस हो रहे हैं? एक तो उसे रेंट फॉर हिमसेल्फ एक्स्ट्रा फॉर 3 months देना पड़ रहा है। सपोज ही इज टेकिंग अनदर 3 months to build the house. So first loss क्या है? First damage क्या है? He would have to pay rent for 3 months for himself. Second damage क्या है? कि जो B से उसको रेंट आना था 3 महीने के लिए, उसको वो भी नहीं मिलेगा। एक तो उसे अपना रेंट देना पड़ेगा, और जो B से उसको रेंट मिलना है for 3 months, वो उसको भी नहीं, वो भी नहीं मिलेगा। So there are 2 damages. So first damage क्या है? This is the direct damage. Second one क्या है? This is the damage arising out of a special consequence. Right? This is damage arising out of a special consequence. So, ये जो special consequence वाला damage है, special situation वाला damage है, इसको हम बोलते हैं special damages. तो special damages तभी claim किए जा सकते हैं जब special circumstances have been made known to the other party beforehand. If A has already told C about about the house being given on rent to B, उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? This will become the case of special damage. और special damage तभी claim कर सकते हैं when special circumstances have already been communicated to the other party. So I hope this is clear. Next is exemplary, punitive और vindictive damages. ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, exemplary, punitive और vindictive damages. ये क्या हो गया? जैसे I told you in the beginning, जो damages है उनका पर्पस है to put the aggrieved party, to compensate the aggrieved party. उसका पर्पस ये नहीं है to punish the guilty party. Right, the purpose is to compensate the aggrieved party. यहाँ पर this example, this kind of damage is an exception to this rule. ये जो exemplary punitive damages होते हैं, the purpose is to punish the guilty party. These damages can be claimed only in these 2 situations. ये जो exemplary punitive damages है, उनको सिर्फ इन्हीं 2 conditions में claim किया जा सकता है. First condition, where there is breach of contract to marry. Second, where a banker refuses to honor a customer's check. So, I'll explain. Suppose A and B, they enter into a contract to marry each other. A and B enter into a contract to marry each other. They were supposed to do court marriage. For instance, उन्होंने court marriage करनी थी जाकर 1 जून को. ठीक है, on 25th of May, A refused to be that I am not going to marry you. अब यहाँ पर there is no monetary loss to be as such. ठीक है, उन्होंने court marriage करनी थी, कोई खर्चा extra नहीं था. There was no expenditure that was made by them. So उनको monetary loss नहीं है. B is suffering no monetary loss, no monetary damage. But if we talk about B is here suffering some mental agony, right? He might be disheartened, or he or she might be disheartened, suffering some mental agony, mental pressure, right? Sadness. So how to compensate it? That cannot be calculated. So इस चीज को कैसे compensate किया जाता है, कैसे दिया जाता है? By giving these exemplary, punitive or vindictive damages, right? ये damages होते हैं to punish A, right? To punish the guilty party. So ये vindictive damages हैं, they are given first in the case of a breach of a contract to marry, right? Second case is where the banker refuses to honor a customer's check, right? Suppose A is a very good businessman. A has a very good reputation, right?
or in the market, and for instance he is having balance of 10 lakhs in his bank account. A के पास बैलेंस है 10 लाख का उसके बैंक अकाउंट में. ए बी को 10,000 का चेक देता है ट्रेड पर्पसेस के लिए. उसने बी से कुछ सामान खरीदा होगा फॉर ₹10,000. अब वो बी को 10,000 का चेक दे रहा है फॉर द गुड्स ही हैड brought from B. Now, suppose the banker refuses the check. Banker says banker dishonors the check. Dishonor check usually कब होता है? Dishonor तब होता है check usually जब बैंक के अंदर sufficient funds नहीं होते. Suppose उसके पास 5,000 का ही बैलेंस है अकाउंट में और उसने चेक दे दिया 10,000 का. Obviously the check will be dishonored. तो चेक डिसऑनर कब होता है? जब सफिशिएंट फंड्स नहीं है. और बैंकर यहाँ पर रॉन्गफुली इसका चेक डिसऑनर कर देता है. He had 10 lakh. Banker dishonors the check of ₹10,000. So again, what is this causing? This is causing harm to the reputation of A. A had a very good image of paying back all his dues. अब अगर banker refuse कर रहा है, so this is harming A's reputation. So where in cases में vindictive damages or punitive damages दिए जाते हैं to the banker in case he is refusing to honor the customer's check where the balances are sufficient, right? Where there is no case of dishonoring the check, but still the banker dishonors the check. So exemplary, punitive or vindictive damages, they are given in these two cases only. And now what are next one is nominal damages. Now what are nominal damages? Nominal का मतलब होता है for namesake. नॉमिनल का मतलब होता है फॉर नेम सेक. सो अगर सिर्फ नेम सेक के डैमेजेस हुए हैं, डैमेज एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ. फॉर इंस्टेंस ए हैज एन इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप, ठीक है, और ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो 31 मार्च को एसी सप्लाई करेगा बी को. ठीक है, ए 31 मार्च को एसी सप्लाई करेगा बी को, बट बी मना कर देता है एसी लेने से. बी मना कर देता है आई डोंट वांट दी एसी और एसी नहीं लेता ए से. बट क्योंकि समर सीजन इज अप्रोचिंग, तो यहाँ पर ए के पास जो एसी की डिमांड्स है वो बहुत बढ़ जाती है एंड ही सोल्स ऑफ दिस एसी टू पार्टी डी. एसी अपना ये डी पार्टी को सेल कर देता है इंस्टेड ऑफ बी. तो इस केस में देखें क्या ए ने कोई लॉस सफर किया है? क्योंकि बी ने उसका एसी नहीं खरीदा, तो इस केस में क्या ए को कोई लॉस सफर हुआ है बिकॉज ऑफ द एसी नॉट बीइंग बॉट? If we see, then there is no loss caused to A, right? Because he was able to sell his AC to D. So यहाँ पर कोई loss नहीं हुआ. But still, if A wants to take B to court of law, the court will grant nominal damages. So nominal damages का person nominal damages होते हैं for name sake. Suppose 50 रुपए, 100 रुपए, just for name sake, right? Depending upon the case. So purpose है just to punish the guilty party. यहाँ पे there is no loss which is happening to the aggrieved party, right? So next kind of these were the kind of damages, right? So पहला हमने केस पढ़ा रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सूट फॉर डैमेजेस. right. Second is सूट फॉर रिसेशन. सूट फॉर रिसेशन हमने ये टर्म ना पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर, रिसाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, रिसेशन. सो रिसेशन का मतलब, रिसाइंडिंग का मतलब होता है बेसिकली कैंसिल करना, टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, राइट. इट मींस टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, टर्मिनेट करना कॉन्ट्रैक्ट. लेट अस एक्सप्लेन दिस थ्रू एन एग्जांपल. In suit for rescission, A B को हायर करता है अपने. A owns a theater
A owns theater और A B को हायर करता है for singing in his theater every Saturday, right? Every Saturday for a period of 10 weeks. A owns a theater and he hires B to sing at his theater for a period of 10 weeks every Saturday. I hope this is clear till here. So B sings continuously for 4 weeks, but on the 5th week, 5वें हफ्ते में B doesn't turn up to sing. B ने यहाँ पे क्या किया? B ने यहाँ पर ब्रीच किया. कॉन्ट्रैक्ट था 10 वीक्स का. 5वें हफ्ते B नहीं गया जाके सिंग करने के लिए एट एज थिएटर. राइट. सो यहाँ पर व्हाट ऑप्शन डज A हैज नाउ? राइट. A के पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे? A के पास एक ही ऑप्शन है. ये ऑप्शन है दैट इट कैन गो टू कोर्ट ऑफ लॉ, और जो बाकी 5 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट रह जाता है, 5th वीक पे नहीं गया, उसके बाद 5 वीक्स बचे, तो ही हैज द ऑप्शन ए कैन गो टू कोर्ट ऑफ लॉ एंड ही कैन रिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिमेनिंग 5 वीक्स. राइट. So this is suit for rescission. So rescission means repudiation or termination of contract. So when one party commits a breach, the other party may sue for rescission and refuse further performance. कि आगे काम नहीं होगा. So it can sue for rescinding, sue for cancelling the contract. Right. And in order to claim damages, it is good to file sue for cancellation. This was just suit for rescission, that meant suit for cancelling of contracts. Next is suit upon quantum merit. So suit upon quantum merit का मतलब है as much as is done. जितना काम किया है उसके पैसे दो. So quantum merit, for instance, A ने कंस्ट्रक्टर को हायर किया अपना घर बिल्ड करने के लिए, कि घर बिल्ड करके देगा कंस्ट्रक्टर, और 2 फ्लोर्स बिल्ड करने थे. कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2 फ्लोर्स बिल्ड करने का. कंस्ट्रक्टर ने 8 फ्लोर कंप्लीटली बिल्ड कर दिया और 2nd फ्लोर was in progress. ठीक है, 2nd फ्लोर was in work in progress. 1 फ्लोर was completely constructed. A को उसका जो उसने 1st फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया, जो भी उसने इंटीरियर्स किए, उसको वो पसंद नहीं आया, तो 2nd फ्लोर को उसने बीच में ही स्टॉप करवा दिया. So in this case, जो कंस्ट्रक्टर है, can he claim money for the 1st फ्लोर? ठीक है, वो 1st फ्लोर के लिए और 2nd फ्लोर पे उसने जितना भी काम किया है, क्या उतने पार्ट के लिए वो मनी क्लेम कर सकता है कंस्ट्रक्टर? Yes, he can do. उसे हम बोलते हैं suit upon quantum merit. Quantum merit means as much as is done. जितना काम किया है उतने के आप पैसे ले सकते हो. पहले वाले एग्जाम्पल में, रिसेशन के अंदर जो मैंने एग्जाम्पल किया, B was singing at A's theater. B sang for 4 weeks. तो B suit upon quantum merit में अपने 4 weeks के पैसे A से ले सकता है. Right? The next is suit for specific performance. Suit for specific performance क्या हुआ? Suppose A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ that A is going to sell 100 liters of a particular oil of coconut oil to B at the price of rupees 30 per liter. 100 liters of coconut oil to B at the price of rupees 30 per liter. Right. अब इस केस के अंदर A सप्लाई नहीं कर रहा B को, मना कर रहा है कि मैं आपको सप्लाई नहीं कर रहा ये इतना लीटर्स ऑफ ऑयल एट दिस रेट. सो बी के पास क्या ऑप्शन है? या तो वो सूट फॉर रिसेशन कैंसिल कर दे, उसको कोई डैमेज हुआ है डैमेज क्लेम कर ले, या फिर इफ बी वांट्स द ऑयल डेस्परेटली, व्हाट ही कैन डू, ही कैन गो टू कोर्ट ऑफ लॉ एंड फाइल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. राइट. सो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या मतलब हुआ कि जो प्रॉमिस किया है पार्टी ने, अग्रीड पार्टी, उससे वो प्रॉमिस करवाए. अगर बी ने प्रॉमिस किया है, ए ने प्रॉमिस किया है बी को कि वो 100 लीटर्स ऑफ ऑयल देगा एट दिस प्राइस, तो बी सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे कि नाउ ए इज सपोज टू डिलीवर
this much of oil to B. और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तब दिया जाता है जब मॉनिटरी मेजरमेंट करना, मैंने ये एक रैंडम एग्जांपल लिया, तो सूट अपॉन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यूजुअली तब दिया जाता है जब मॉनिटरी कॉम्पनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रिलीफ। वहां पर मॉनिटरी कॉम्पनसेशन कितना दिया जाना चाहिए कितना नहीं, दिस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, दिस कैन नॉट बी एसर्टेन्ड, तो उन केसेस में दिया जाता है यूजुअली सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वन मोर थिंग, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर जो टास्क है वो पर्सनल नेचर का है तो उस केस में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इट कांट बी ऑर्डर्ड। रिपीट कर रही हूँ, अगर जो केस है वो एक पर्सनल नेचर का है, फॉर इंस्टेंस A entered into contract with B that B is going to sing at A's theater, B sing करेगा, तो ये जो सिंगिंग है दिस इज ऑफ पर्सनल नेचर। अब A B सपोज 4 वीक्स पे ब्रीच करता है, B 4 वीक्स पे ब्रीच करता है, तो इस केस के अंदर A कैनॉट गो टू कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट B फॉर सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा। जहां पर भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो पर्सनल नेचर की है, देयर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कांट बी टेकन अप। नेक्स्ट इज सूट फॉर इंजंक्शन। सूट फॉर इंजंक्शन क्या हुआ, सूट फॉर इंजंक्शन हुआ टू स्टॉप, टू स्टॉप समबडी, ठीक है, जो काम है टू रिफ्रेन द अदर पर्सन टू डू समथिंग। फॉर इंस्टेंस इनके बीच में जो बी था, बी स्टार्टेड सिंगिंग एट सीज थिएटर, 10 वीक्स का इनका कॉन्ट्रैक्ट था कि बी इज गोइंग टू सिंग एट एज थिएटर फॉर पीरियड ऑफ 10 वीक्स, ठीक है, लेकिन बी इंस्टेड ऑफ सिंगिंग एट एज थिएटर ही स्टार्टेड सिंगिंग एट सीज थिएटर। सो इन दिस केस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं कर सकता ए बी के ऊपर, बट वो इंजंक्शन कर सकता है कि स्टॉप कर सकता है, बी शुड नॉट सिंग एट सीज थिएटर फॉर द पीरियड ऑफ फर्दर 6 वीक्स, जब तक वो 10 वीक्स वाला पीरियड पास ना हो जाए, देन वहां पर सूट फॉर इंजंक्शन किया जा सकता है, राइट। और ये कब किया जा सकता है, फॉर इंस्टेंस बी सेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू सिंग एट सीज थिएटर, बी ने बोला आई विल नॉट सिंग एट सीज थिएटर एंड ही स्टार्ट सिंगिंग एट सीज थिएटर, सो A can take B to court of law and say that C will not sing for B will not sing at C's theater for period of further 6 weeks, जब भी उनका वो टाइम पीरियड खत्म हो रहा है उसके लिए। So these are the 5 remedies for breach of contract. Just have a look. कोई डाउट हो तो you can post them. So this completes the chapter. इससे breach of contract जो है ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। So let us take a break for 2 minutes. Then we will start the another chapter, contract of agency. Just give me 2 minutes and then we will start the another chapter, contract of agency.
Okay, so next chapter is contract of agency. हमने जब कंसिडरेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, कंसिडरेशन वाले चैप्टर के अंदर चीज पढ़ी थी that exceptions to consideration में no consideration is required for creation of agency, right? So तब भी हल्का सा बताया होगा मैंने कि what is agency, right? So agency is nothing but the relationship between agent and principal, right? Agency is relationship between agent and principal. Now we understand what is agent and what is a principal. So agent, if suppose A wants to buy a car, okay, wants to buy a car and he hires B to buy a car from himself from the dealer. Okay, what is B here? B is representing A. B is supposed to go to D and talk to him about the car, take the details of the car. So A is the principal here, right? The person who is being represented in dealings with a third party is principal, and B is the B here is the agent. So agent is the person who is representing the another person in dealings with the third party. The person who is being represented is called principal, and the person who is representing the principal in dealings with third party is called agent. And the relationship between these two, relationship between agent and principal is called agency. Right. So what are the essential features of contract of agency? Right. सबसे पहला है there must be an agreement between the principal and the agent. ठीक है, principal और agent they should agree, right? कि yes, a principal should agree, yes, I want to make you my agent, I want you to represent me in dealings with third parties, and agent says okay, I am willing to represent you. There should be an agreement, there should be some agreement between principal and agent. Next is competency of principal is required, right? So principal should be competent to contract. Competent to contract कौन होते हैं? One, the person is of sound mind, the person must have attained the age of majority, and the person should not be debarred by law. And why is that? So why the principal should be competent? Because suppose A ने सपोज पी ने प्रिंसिपल ने अपने लिए एजेंट हायर किया टू रिप्रेजेंट हिम इन डीलिंग्स विद जेड. प्रिंसिपल ने एजेंट हायर किया टू पी ने ए को हायर किया टू रिप्रेजेंट हिम इन डीलिंग्स विद जेड. अब तो क्वेश्चन हियर इज जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और जेड के बीच में हो रहा है या ए और जेड के बीच में हो रहा है? राइट, ए इज रिप्रेजेंटिंग पी इन डीलिंग्स विद थर्ड पार्टी. So what the contract is happening, where the contract is happening, between whom the contract is happening? The contract is happening between P and Z, right? So for the contract, for this contract to be valid, principal must be competent, right? If there has to be a valid contract between third party and the principal, so both third party and the principal, they must be competent enough to contract, right? So this is competency of principal. So competency of principal is required. Next is competency is not required for agent. So क्योंकि यहाँ पर agent is representing P, agent is representing principal. So in this case, competency of agent is not required because the contract is ultimately happening between P and Z. Now the question is, what happens if P is इनकॉम्पिटेंट? अगर P इनकॉम्पिटेंट है तो उस केस में एजेंट विल बी पर्सनली लायबल टू जेड. तो कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाएगा वहां पे जो लाइबिलिटी आ जाएगी वो प्रिंसिपल की नहीं आएगी. सपोज P माइनर है, ठीक है, तो वहां पर जो लाइबिलिटी आएगी वो आएगी ए की. ए विल हिमसेल्फ बी लायबल, ठीक है. ए की लाइबिलिटी होगी अगेंस्ट द प्रिंसिपल, सॉरी अगेंस्ट द थर्ड पार्टी. Right, so I hope this much is clear. Competency of principal is not required, and competency of principal is required, and competency is not required for an agent. Next is creation of legal relationships. तो यहाँ पर जो A है, A is basically making P and Z enter into a contractual obligation. Agent
is making P and Z enter into a legal relation, into a contractual relationship. Consideration is not required. Consideration between principal and agent is not required. Agency can be formed even if there is no consideration. Right? So these are some essential features of agency. Right? So now creation of agency. So let us understand how can the agency be created. Agency का creation कैसे हो सकता है? How can agency be formed? So the first, the four basic modes agency कैसे form हो सकती है? Agency can be formed by express agreement, by implied agreement, ठीक है, by ratification और by operation of laws. ये चार ways हैं जिनसे agency can be formed. Right. So the first one, express agreement. What does express agreement say? Express क्या होता है? Which is made by words. Words could be oral or written. Right. So express agreement between agent and principal. Express agreement है if there is an express agreement between agent and principal that yes, agent says I am willing to represent you, and the principal says yes, you are going to represent me. तो ये हो जाता है express agreement, right? Where there is written agreement, where there is agreement which could be either written or oral, but there is express, there is use of words. Use of words, words could be oral, words could be written, right? So agency by express agreement ऐसे form हो रही है. Next is agency by implied agreement. So implied हमने पहले भी पढ़ा, implied contract. वहां पर words use नहीं हो रहे, ठीक है? Circumstance of case से, behavior से imply किया जा रहा है. इम्प्लाई किया जा रहा है कि हाँ सर्टेन स्टेट ऑफ सर्कमस्टांस एग्जिस्ट. सो इम्प्लाइड अग्रीमेंट के अंदर ये तीन केसेस हैं, ठीक है? इम्प्लाइड में ये तीन केसेस हैं. लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. वेयर देयर इज एजेंसी बाय एस्टॉपल. एजेंसी बाय एस्टॉपल के अंदर the doctrine of estoppel states that where a person by his conduct or statement willfully allows the other person to believe that certain state of circumstances exist, right? But in actuality it does not. So उस case में ये agency by estoppel आ जाती है. Let me explain through an example. If for instance A in the presence of P says to Z, A is actually not an agent of P. जो A है, A is a different party, P is a different party. A और P के बीच में there is no contract, there is no contract as such. A is agent of P, right? There is no contract between them. But A in presence of P says to Z that I am agent of P. Repeating, A in presence of P says to Z that I am agent of P. Or Z enters into agreement, enters into a contract with A on believing the statement. Z thinks that he is entering into a contract with P. A believes, A gets induced by A's statement and enters into contract. Right? So in this case, agency by estoppel is created. अब P ने पहले मना नहीं किया Z को, A को Z के सामने कि no, A is not my agent. He stayed quiet. So by his behavior, he showed to Z that A is actually his agent, right? So in this case, P later on cannot refuse कि A मेरा agent नहीं है. यहाँ पे P पहले शांत रहा, A ने बोला P के सामने मैं P का agent हूँ, and A didn't say anything. So later on P cannot deny कि A मेरा agent नहीं है, right? This is agency by estoppel. So estoppel में क्या हो रहा है? A person by his conduct is allowing another person to believe something, and if the other person has acted upon that something, जो ये person है, right, it cannot back out. जिसने बोला है, जिसने believe कराया है दूसरे person को, that person cannot back out. So this is agency by estoppel. Next is agency by holding out. Right, so one thing to be noticed in agency by estoppel कि यहाँ पर जो principal है, जो P था, remained silent. उसने कोई एक्शन नहीं किया दिखाने के लिए कि ए मेरा एजेंट है. He just remained silent. But holding out के अंदर क्या हो रहा है? Holding out में there
the conduct of the person is making the other believe कि हाँ ये exist करता है. ये थोड़ा active form है. जो estoppel है ये थोड़ा passive way है समझाने का दूसरे person को, but जो holding out है this is a passive form. Passive form कैसे? Suppose A has a servant. A has a servant और उसका जो सर्वेंट है उसके बिहाफ पर वो उसके लिए मार्केट में खाना लेने जाता है. ठीक है, एक का सर्वेंट उसके लिए सपोज ग्रोसरी परचेज करने जाता है एंड दे परचेज देयर ग्रोसरी फ्रॉम बी ऑन क्रेडिट. ठीक है, ए परचेजेस इज ग्रोसरी फ्रॉम बी ऑन क्रेडिट और मंथ एंड में वो पेमेंट कर देता है. तो वो अपने कभी कभी सर्वेंट को भी भेज रहा है बी के पास उसके लिए सामान खरीदने. ठीक है, सामान खरीदने. पर अगर वो सर्वेंट को भेज रहा है so this doesn't mean सर्वेंट जो है वो एजेंट है. ए अगर अपने सर्वेंट को भेज रहा है बी के पास सामान खरीदने, बट दिस डजंट मीन सर्वेंट इज एजेंट ऑफ इट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड सर्वेंट. राइट, सर्वेंट वो ही करेगा जो उसे कहा जा रहा है, वो अपना डिस्क्रिप्शन यूज नहीं कर सकता. ठीक है, एजेंट क्या है? एजेंट कैन यूज द डिस्क्रिप्शन. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्वेंट एंड द एजेंट. सो servant cannot bind the principal, bind his master in dealings with third party, but an agent can bind his principal in dealings with third party. So he is sending his servant to buy goods for him to be. एक दिन जो सर्वेंट है वो क्रेडिट पे अपने लिए सामान खरीद लेता है. सर्वेंट बाय सपोज 10 liters of milk from B for himself. Now the question is, will A be liable to pay B for this 10 liters? Answer is yes, A will be liable to pay B for this 10 liters of milk which was purchased by servant on credit from B. Right, so this is agency by holding out. Agency by holding out में क्या हो रहा है? A ने अपने behavior से show किया है कि जो servant है उसके लिए वो goods लेके जा रहा है. ठीक है, goods लेके जा रहा है, वो उसका एजेंट है, ऐसे उसने शो किया हुआ है. अगर सर्वेंट ने अपने लिए सामान खरीद लिया बी से, ठीक है, तो उस केस के अंदर ए विल बी लायबल टू पे बी, चाहे वो बाद में उसकी सैलरी से एडजस्ट करे, उसको पैसे कम दे, राइट, नौकरी से निकाले, जो भी करे, बट हियर ए इज सपोज टू पे बी फॉर दिस 10 liters of milk purchased by servant on credit. This is agency by holding out. Next is agency by necessity. So agency by necessity क्या होता है? जब कोई urgent circumstances आ जाए, necessary situations आ जाए, right? A person is supposed to act as an agent for somebody else. तो ये हो जाता है agency by necessity. For instance, अगर suppose जो agent है वो अपने principal के लिए कभी कभी अपनी authority के beyond जाकर कुछ काम करे, he is not able to reach out to his principal, वो अपने प्रिंसिपल से बात नहीं कर पा रहा, कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल रीचेबल नहीं है और उस सिचुएशन में रिक्वायर्ड है जो एजेंट है अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड कुछ काम करे. सो दैट इज वेयर दिस नेसेसिटी हैज अराइज. तो वहां पे वो बन जाता है एजेंसी बाय नेसेसिटी. तो सपोज एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो सर्टेन गुड्स सेल कर सके, वो बाय कर सकता है फ्रॉम थर्ड पार्टी. ठीक है, he can make his principal liable for buying agreements with third party, but he cannot sell. But कुछ necessity arise हो गई है, suppose कुछ goods rotten हो रहे हैं और वहां पे necessary है that agent sells off those goods. Sell नहीं करेगा तो principal का नुकसान हो जाएगा. Right, so in that case agency by necessity आ जाती है. ठीक है, कि agent ने उन goods को sell करना है किसी और person को, तो sell करने के लिए एक sale agreement में उसने अपने principal को bind कर दिया है. तो एजेंसी बाय नेसेसिटी कब आ रही है? एक तो केस में तब आ रही है व्हेन द एजेंट इज एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी इन द सिचुएशंस ऑफ नेसेसिटी एंड ही इज नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द प्रिंसिपल. एक सिचुएशन तब आ रही है व्हेन द एजेंट when actually the agent suppose let me take another example of of husband and wife. So wife is usually considered as the agent of wife can be considered as an agent of the husband, right? So in certain situations of necessity ये relationship वैसे नहीं होता, but अगर wife कोई काम कर रही है या husband कोई काम कर रहा है अपने wife के behalf पर, तो वहां पर
So ये रिलेशनशिप आ जाता है आउट ऑफ नेसेसिटी. सपोज हस्बैंड का कुछ काम होना है, हस्बैंड इज नॉट प्रेजेंट, वाइफ हैज टू डू इट. और वाइफ का कुछ काम होना है, हस्बैंड इज नॉट प्रेजेंट बट द वर्क नीड्स टू बी डन. सो दे कैन टेक डिसीजंस ऑन ईच अदर्स बिहाफ. तो यहाँ पर ये आ जाती है एजेंसी बाय नेसेसिटी. सो आई होप दीज टू, क्रिएशन ऑफ एजेंसी के अंदर ये जो दो चीजें हैं, एजेंसी बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट एंड एजेंसी बाय इम्प्लाइड अग्रीमेंट, दे आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये रिमेनिंग एजेंसी बाय रैटिफिकेशन इसका इंपॉर्टेंट और एक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो जाता है. एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉज इज अ स्मॉल टॉपिक. एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर आई विल एक्सप्लेन. फॉर इंस्टेंस जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स दे आर कंसिडर्ड एज एजेंट्स ऑफ द कंपनी व्हिच इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड. ठीक है, सो दिस इज एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. So agency by ratification I am going to cover in the next class. That will take a bit of time. थोड़ा सा समझने वाला वो टॉपिक है, व्हाट इज एजेंसी बाय रैटिफिकेशन, एंड आई डू दिस टॉपिक पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द एजेंट इन नेक्स्ट क्लास. So duties and rights of agent, you can go through them. You can take a screenshot of this slide. Duties of an agent क्या हुआ, you can take the screenshot. ये सारी ड्यूटीज हैं, आप इनको पढ़ लोगे, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा क्या क्या ड्यूटीज हैं ये. Right. Next is rights of agent. Read them. You will understand what are the rights of an agent. So just read them. आपको समझ में आ जाएगा. Take screenshot of this slide as well. It's nothing much to explain. Please go through them. So I'll do this. I'll do agency by ratification and personal liability of agent in next class, and then I will start with the chapter indemnity and guarantee on Saturday. So if there are any doubts, you can please post them in the question answer box. इंजंक्शन में, इंजंक्शन के अंदर आप दूसरे पर्सन को स्टॉप कर रहे हो कुछ करने से. मैंने बताया ए और बी के बीच में प्रॉमिस हुआ कि बी ए के थिएटर में सिंग करेगा और बी कहीं और सिंग नहीं करेगा. बी विल नॉट सिंग समवेयर एल्स बट बी स्टार्ट सिंगिंग समवेयर एल्स. तो उसमें ए सूट फॉर इंजंक्शन कर सकता है. ए कोर्ट में जाकर बोल सकता है दैट बी विल नॉट सिंग एनीवेयर एल्स टिल द सेड पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर. ये है इंजंक्शन कि अगर एक पर्सन ने प्रॉमिस किया है, he is not going to do something in a contract and he starts doing that something, so in injunction he can be stopped. Suit for rescission is basically suit for cancelling the contract. अपना जो पार्ट है, अगर किसी पर्सन ने ब्रीच किया तो वो अपना लॉफुली जाके कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है कि ये आगे काम, ये आगे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जाएगा. दिस इज सूट फॉर rescission, suit for rescinding. So any further doubts? Okay, so no further doubts. So I am ending the session for today. I will meet you on Saturday, cover the remaining topics there, and will also start with the chapter indemnity and guarantee. Thank you, class.